This is the diagram. This is line A, B. This is line C and D. This is line E and F. And this is angle X. This is angle Y. And this is angle Z. And this is line F. Okay. So in the given, what is given here? Given. So given is what? That AB parallel to CD. AB parallel to CD and CD parallel to EF. This is given. Also Y ratio Z equal to 3:7. ये given है आपको. Y ratio Z क्या है? 3:7 है. This implies कि हम y की वैल्यू क्या ले लेंगे, क्योंकि इसमें the variable which is used in this question is x, y and z, so we have to take another variable for showing this ratio. So let y is equal to thrice of a and z is equal to 7 of a. Okay, so to find or to prove, here is to find the value of x. To find x. Now solution. So what is the solution here? Let's do. These x and y are the co-interior angle. Okay, as you can see that this x and y, this x and this y are what? This x and this y are the co-interior angle, and this z is, actually we have to find the relation between all these three angles and then we solve it. Okay, first of all, as you can see that AB is parallel to CD. Okay, this AB is parallel to CD and this CD is parallel to EF. And also, you know, if the same line is parallel to the different line, okay, then this implies that these two lines are parallel to each other. Okay, so using this criteria we can write it here that as AB parallel to CD and CD parallel to EF, this implies AB is parallel to EF. It means these all three lines are parallel to each other. Now, if for a while, if you just forget for a while that the portion between this line, okay, if you forget for a while, just forget it. Okay, so here what we have that this AB is parallel to this EF. Okay, so X and Z is what? X and Z are what? Alternate interior angles. So X and Z are alternate interior angle. This implies that angle X is equal to angle Z. तो angle X किसके equal होगा? Angle Z के equal होगा. And also X and Y are co-interior. This implies angle X plus angle Y का जो sum है वो कितना होगा? 180 degree होगा. As we know that the angle on the same side of transversal क्या होते हैं? उनका sum क्या होता है? 180 degree होता है. अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, the value which we are given is value of Y
and then it means we have to find an equation in which y and z is available. Here x is equal to z, so here we can write here we can write z over the place of x. Okay, so we can write here the z over the place of x. Now we have the value of y and z. Okay, so z is 7a and y is 3a equal to 180 degree. So 7 or 3 value it gives 10a and a becomes 18 degree. So a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18 डिग्री. Sorry, let's write it again. यहाँ से आपका a कितना आ गया 18 degree. Okay, so a is 18 degree. This implies उसने find out क्या करने वाली वैल्यू x की वैल्यू x किसके इक्वल है z के इक्वल. सो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी एंगल z इक्वल टू क्या है x और यही z किसके इक्वल है 7a. अब 7 इंटू a इंटू 18 कितनी वैल्यू आ जाएगी 126 degree. Okay, so this is the question number 2 of exercise 6.2. Now moving to the next question. Okay, moving to the next question number 3. Now firstly we have to draw the diagram of question number 3. Okay, if you want any explanation again of any question number, then you can just comment me in the message box so that I came to know that if you have any problem, then I will explain the question again. And also this is the time of your final examination, so if you have any problem regarding any question or any solution, any kind of problem you have, so you can just message me in any class up to the 12th, maybe higher. This is A, this is G, this is F, this is E, and this is C, this is D, and this one is B. Okay, so this one is B. So this is the diagram. Now what is key one? Always just focus on what is key one and what we have to find. So here let's write down the given. So what is given here? Here is given AB is parallel to CD. That AB parallel to CD. Okay, it means that all the property of parallelity hold here. And EF perpendicular to CD. As you can see, they give the symbols of this 90 degree here. Next is angle GAD. Angle GAD is 126 degree. To find, now we have to find, what we have to find is angle AGE, angle GEF, angle FGE. So we have to find these angles AGE, GEF and FGE. Solution. चलिए, GED angle, first you have to, where is the GED angle? Because ये जो सेंटर में सिंबल होता है ना, जो सेंटर में लेटर होता है, यहाँ पे एंगल बनता है.
सो जी इज दिस, ई और डी ये कहाँ तक जा रहा है, जी यहाँ से चल रहा है, ठीक है, यहाँ से चल रहा है, ठीक है, ठीक है, जी के जी ई डी, यानी इस ये एंगल टोटल क्या है 126 डिग्री। मैं इसको मार्क भी कर देती हूँ। ओके, सो ये एंगल, ये सारा एंगल, I'm just gonna to highlight it with the different color। ये सारा एंगल कितना है 126 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है, जो भी फाइंड आउट करना है तो आप उसको नंबरिंग दे लो, या फिर आप उसको क्या करो कि उसको किसी पेंसिल वगैरह से हाईलाइट कर लीजिए। अब जगह से ए जी ई है, ठीक है, अब ए जी ई यानी ए जी और जी ई लाइन के बीच का कॉर्नर, ए जी और जी ई, वेर इज ए जी, ये बाहर जा रहा है, ए जी जी ई के बीच में कौन सा पोर्शन बन रहा है, ये वाला। सो दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जी ई एफ, यानी जी ई और ई एफ, जी ई और ई एफ के बीच में एंगल है ये वाला, यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करने का। ओके, नेक्स्ट इज एफ जी ई, सो एफ जी ई को भी देख लेते हैं कहाँ है, एफ जी और ये ई ऐसे भी चीज जाएगा, तो एफ जी ई, यानी दिस एंगल यू हैव टू फाइंड। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो now you have to find these three angles by using the all the property which you have studied earlier. So let's start. What is given that AB parallel to CD. अगर ये AB parallel है CD के, it means the all the property that corresponding angle are equal, alternate interior angle are equal, they both the property hold. Now you can just see it here. Also ना alternate interior के लिए Z बनता है, मैं Z को भी मार्क कर देती हूँ, that how Z form, like again I will just stick it. ये देखिए, ये यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर अगर आप चेक करें, सो ये जो एंगल है आपका ये वाला, दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, और ये पूरा एंगल, क्योंकि आप ध्यान से अगर देखिए जो ये एंगल है ना, यहाँ पे ये ऐसे जेड बन रहा है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, देखिए ये जा रहा है इधर रेडी के ऊपर, ये क्या बन रहा है आपका, ये ऐसे करके ये जेड बन रहा है, ये लाइन जो है ये जेड बना रही है, ठीक है। अगर ये जेड बना रही है तो ये पूरा का पूरा और ये पीछे वाला पूरा, ये क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो इसका मतलब ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल बन रहा है ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा, ये पूरे का पूरा 126 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। अब हम इसको राइट डाउन करेंगे, ए बी parallel to CD. AB is parallel to CD. If AB is parallel to CD, this implies angle AGE. आपने जहाँ पे एंगल उसको सेंटर में रखना है और लाइन को फिर आगे, एंगल GAD, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। You have to define the reason along with every action. So AGE आपका एंगल कितना आ जाएगा, AGE एंगल आपका 126 डिग्री। आप यहाँ पे लिख दीजिए, ग्रीन से लिख देती हूँ मैं। सो ये भी क्या आएगा आपका 126 डिग्री। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आप ये देखिए, ए बी इज अ लाइन, इफ ए बी इज अ लाइन, ये ए बी एक लाइन है, इफ ए बी इज द लाइन, इट मीन स्ट्रेट लाइन ना, तो ये जो एंगल होगा ये क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। अगर मैं इसको मार्क कर दूँ सारे, तो ये क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल बन रहा है,
ठीक है। अगर ये सेमी सर्कल बन रहा है तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, सो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। चलिए अब हम जो हमने बोला हम वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी चलिए नाउ एंगल ए जी ई प्लस एंगल ए जी ई ए हो। नाउ इसको ना आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जी ई एफ पढ़ोगे तो वो भी गलत है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ेंगे एफ जी ई, बिकॉज अगर आप इधर से ही पढ़ोगे ना ए जी ई तो अंदर इधर का भी एंगल हो सकता है, बहुत साइड मतलब पूरा भी हो सकता है। प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। AGE is 126, AGE is 126, FGE equal to 180. So angle FGE क्या हो जाएगा 180 डिग्री minus 126 डिग्री, and this is 64 54. So answer is 54 डिग्री। ठीक है जी, अब आप इसको यहाँ पे भी मार्क कर लीजिए। Thus this angle is 50। मैं तो सिर्फ आपके लिए दिखा रही हूँ, you need not to mark it in the diagram because as you finding it in the solution. Next what is remained here, only the angle, because आपने AGE भी निकाल लिया, FGE भी निकाल लिया, रह गया GEF. So only the GEF is remained, this yellow. Okay, so this angle is only remained. Now how you can just find it, अब आप ट्रायंगल यूज कर सकते हैं बिकॉज ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 है, इट मीन्स यहाँ भी 90 ही होगा। एंड हम रफली अगर चेक करें तो ये 90 प्लस 54 मतलब इन दोनों का सम 90 होगा ना, तो 54 अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो ये आपका कितना आ जाएगा 36, है ना। ओके, सो जो हमने अभी डिफाइन करा हम उसी को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट मूविंग अहेड। हम क्या यूज कर रहे हैं, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ये ट्रायंगल बन रही है ना, ये ट्रायंगल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर ये 90 है तो यहाँ से ये पूरा ये अंदर वाला भी क्या होगा 90 होगा ना, क्योंकि देखा जाए तो ये भी क्या बन रहा है, एक ये जेड तो बन रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये भी क्या बन रहा है जेड बन रहा है। तो यानी अगर ये 90 है तो ये भी क्या है 90 है। अब एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल आपको दिख रही होगी GEB सॉरी ये 90 है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये 54 है, तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा 90 माइनस 54। हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके अंदर। ओके, चलिए डायग्राम विजिबल हुआ। सो हम क्या कहेंगे इन ट्रायंगल GFE, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल GFE। अब ट्रायंगल में क्या मिला आपको कि जो एंगल GFE है तीनों ट्रायंगल का सम क्या है 180 डिग्री। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एंगल G इन ट्रायंगल में, देखना ना ट्रायंगल में हम इसको E भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन आप लिख दीजिए GFE GEF FG, तो तीनों आपको लिखने पड़ेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे एंगल GFE प्लस एंगल, अब एक बार GFE EGF प्लस एंगल, अब G भी आ गया सेंटर में, F भी आ गया, E रह गया EGEF equal to 180 degree. Let me check once. GFE 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 EGF EGF EGF
EG/F4 है और GEF आपको फाइंड आउट करना है. GEF ऑफ फाइंड. सो दिस इज 90, दिस इज 54 और ये हमने GEF क्या करना है, फाइंड आउट कर रहा है. एंगल GEF क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 54. आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 36 डिग्री. ठीक है. सो मतलब ये आंसर कितना हो गया, 36. एंगल GEF कितना हो गया, GEF ये कितना हो गया, 36 डिग्री. जितने भी एंगल फाइंड आउट करने थे. ओके. सो नाउ मूविंग अहेड, because you have to use the properties again and again. If two lines are parallel, the corresponding line angles are equal, the alternate interior are equal, sum of co-interior angle is 180 degree. Linear pair आपको proof use करना है. So again and again you have to use the same things. इसलिए properties आपको पहले आनी चाहिए. You have to use property firstly. Now, question number 4. Number 4 NCERT. क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले. This is P, this is Q, this is 110 degree, this R, this is S, this is 130 degree, and now this is T, this is T point. Okay, so now again what we have to write, given oh given. So given में आपके पास क्या given है, PQ is parallel to PQ parallel to ST. एंगल PQR is 9 को given दिख रहा हो तो एंगल PQR एंगल PQR equal to 90 degree, sorry 110, sorry 110 degree, and RST 130 degree. Angle RST equal to 130 degree. To find आपने क्या करना है, एंगल QRS, we have to find this. So firstly you have to mark the angle which we had is this. Now let's thinking about that how to solve it. Okay, so वैसे तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करके करते हैं, बट देखते हैं अगर आपके पास आपको विदाउट एनी एक्सटेंशन ये हो जाए, because these two lines are ना parallel. Okay, so
it should be from okay, these two lines are now parallel. So how we can use it? आप इसको क्या करिए, पहले इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन को ऐसे बढ़ा लीजिए, ठीक है, इनमें से बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हुई है. सो एज यू कैन सी ये लाइन, ये लाइन और ये ऐसे, मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है. तो कंस्ट्रक्शन में आपको ना लिखना पड़ेगा दैट ड्राइंग नेम यू वांट टू गिव टू इट, that this line is parallel to this. Okay, so let's do the construction. Okay, because these two lines are not आप fairly visible नहीं कर पाओगे आप, जैसे पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी ना, ठीक है. आप किसी एक के पैरेलल इसको कंस्ट्रक्ट कर लीजिए. राइट डाउन हियर कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, लाइन ई एफ पैरेलल टू पी क्यू. Solution. Solution is what here, that EF is parallel to PQ, है ना, as we have taken that EF